नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। 4th यूनिट में वर्चुअल मेमोरी इन ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी एक स्टोरेज मेथड होता है जो पर्टिकुलर किसी भी मेन मेमोरी के साथ में सेकेंडरी मेमोरी के साथ में एक एसोसिएशन करता है, जो पर्टिकुलर किसी भी सेकेंडरी मेमोरी का प्रमोशन करने के लिए काम में लेते हैं। जब हम पर्टिकुलर किसी भी सेकेंडरी मेमोरी को हम यूज में लेते हैं तो एक वर्चुअल मेमोरी का काम करता है। इसके अंदर डिमांड पेजिंग होता है, फ्रेम एलोकेशन होता है, सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या होता है। वर्चुअल मेमोरी स्टोरेज मेथड known as the virtual memory gives the user the impression that their main memory is quite large by considering a promotion of secondary memory as the main memory. This is accomplished by giving the user the impression that there is the memory available to load the process. This approach allows this to load the large size program then the primary memory that is accessible. The operating system loads the main memory component of the several process in main memory as op to loading a single large process there. By doing this, the level of multiprogramming will be enhanced, which will be increased by the CPU consumption. इसके अंदर क्या होता है? एक डिमांड पेजिंग होता है। डिमांड पेजिंग क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी कंडीशंस के साथ में वर्चुअल मेमोरी को हम आकर करते हैं, जब इसके साथ में कोई भी प्रोसेस स्टोर सेकेंडरी मेमोरी के साथ में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिमांड पेजिंग बोलते हैं। डिमांड पेजिंग इज कंडीशन विच इज अकर्ड इन द वर्चुअल मेमोरी। वी नो दैट द पेज ऑफ द प्रोसेस आर स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। द पेज इज brought to the main memory when required. We do not know when this requirement is going. And then after to occur, so the page are brought to the main memory when required by the page replacement algorithms. So the process of calling the page to main memory to the secondary memory upon the demand is known as the demand paging. अब इसके अंदर क्या होता है? एक होता है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? एक फ्रेम एलोकेशन, एक पेज रिप्लेसमेंट। फ्रेम एलोकेशन क्या होता है? हाउ मैनी फ्रेम आर टू बी एलोकेटेड टू द प्रोसेस। पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है? विच पेज इज टू बी रिप्लेस्ड। 2 तरीके का, फ्रेम एलोकेशन एंड पेज रिप्लेसमेंट। तो फ्रेम एलोकेशन क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। फ्रेम एलोकेशन इन वर्चुअल मेमोरी। डिमांड पेजिंग इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द वर्चुअल मेमोरी, एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ए पेज रिप्लेसमेंट मैकेनिज्म एंड ए फ्रेम एलोकेशन एल्गोरिथम मस्ट बी क्रिएटेड फॉर डिमांड पेजिंग। इफ यू हैव द numerous process, frame allocation technique are utilized to determine how many frames to provide to each process. A physical address is required by the central processing unit for the frame creation, and the physical addressing provide the actual address to the frame created. For each page, a frame must be created. फ्रेम एलोकेशन कंस्टेंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला कंस्टेंट्स होता है द फ्रेम दैट कैन बी एलोकेटेड कैन नॉट बी ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स। एक होता है ईच प्रोसेस शुड बी गिवन ए सेट मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रेम। नेक्स्ट होता है व्हेन फ्यूअर फ्रेम आर एलोकेटेड देन द पेज फॉल्ट रेशियो इंक्रीज एंड द प्रोसेस एग्जीक्यूशन बिकम्स लेस एफिशिएंट। नेक्स्ट क्या होता है? देयर अप टू बी द सफिशिएंट फ्रेम टू accommodate all the many page that is a single instruction may refer to. नेक्स्ट हम इस प्रोसेस के बारे में जब बात करते हैं तो इसके अंदर एक आता है फ्रेम एलोकेशन।
फ्रेम एलोकेशन क्या होता है? There are three type of frame allocation algorithm in operating systems. There are, one is the equal frame allocation algorithm, another one is the propagate frame allocation, एक priority frame allocations. तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वल फ्रेम एलोकेशन एल्गोरिथम्स के बारे में. इक्वल फ्रेम एलोकेशन के अंदर क्या होता है कि द फ्रेम एलोकेशन एल्गोरिथम वी टेक नंबर ऑफ फ्रेम एंड number of process at once. We decide the number of frame by number of process we get. The number of frame we must provide for each process. This means if we have 36 frame and 6 process, for each process 6 frame are the allocated. It is not very logical to assign equal frame to all process in the system with process of different size. A lot of allocated but unused frame will eventually be wasted if a lot of frame are given to a little operations. Next क्या होता है? Propagate frame allocation algorithm. Here in this frame allocation algorithm we take number of frames based on the process size. For big process more number of frame is allocated. For small process less number of frame is allocated by the operating system. The problem in the property frame allocation algorithm is number of frame are wasted in some rare case. The advantage of the property frame allocation algorithm is the instead of equally each operation divided is available frame according to the demands. Next क्या होता है? Priority frame allocation algorithm. According to the quantity of the frame allocation and the process priority frame allocation dispersed frame and the process has a high priority and need more frame. In such case, additional frame will be given to the process. Process with lower priority are then later executed in further the first only high priority process are executed. Another one is the page replacement algorithm. Page replacement algorithm में क्या होता है? एक होता है optimal page replacement algorithm, एक होता है first in first out page replacement, एक होता है least recently used LRU page replacement algorithms. इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, इसके अंदर क्या होता है कि द फर्स्ट बेसिक एल्गोरिथम ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, द एल्गोरिथम इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ फ्रेम यूज्ड. देन ईच फ्रेम टेकन अप द सर्टेन पेज एंड ट्राई टू एक्सेस. व्हेन द फ्रेम आर फिल्ड देन the actual problem starts. The fixed number of frame is filled up with the help of the first frame present. This the concept is the fulfilled with the help of the demand paging. इसका क्या होता है? एग्जाम्पल होता है डिमांड पेजिंग का, जिसके अंदर पेज नो फाउंड, पेज फाउंड और रेफरेंस सेटिंग के अंदर होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट की. ये ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट होता है. इसके अंदर सेकंड बेस्ड एल्गोरिथम होता है जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को हम यूज में लेते हैं, जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्रेम. ईच फ्रेम टेकन अप द सर्टेन पेज ट्राइज टू एक्सेस व्हेन द फ्रेम आर फिल्ड देन द एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट्स. द फिक्स्ड नंबर ऑफ फ्रेम फिल्ड अप विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट फ्रेम प्रेजेंट. कॉन्सेप्ट इज फुलफिल्ड विद द हेल्प ऑफ द डिमांड पेजिंग. Then this is the example of page replacement algorithms. And next हमारा least recently used LRU replacement algorithm. This is the last basic algorithm of page replacement algorithm. This algorithm is basically dependent on the number of frame used. Then each frame takes up the certain page
and tries to access. When the frames are filled, then the actual problem starts. The fixed number of frames is filled up with the help of the first frame present. The concept is fulfilled with the help of the demand paging. After filling up the frame, the next page is the waiting queue tries to enter the frame. If the frame is present, then no problem is occurred because of the page which is to be searched is already present in the allocated frame. Then this is the example of least recent algorithm frames. एंड नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द थ्रेशिंग। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।